A very good morning, all my dear students. I, Miss Pallavi Dhole, welcomes you all in this today's lectures of programming with Python. Okay, so we are dealing with the very first unit, that is introduction and syntax on the Python programming. Now today we have conducted the fourth lecture, which is basically on the variables data types in the Python programming language. So let us discuss the variables in the Python programming. See, Python variable types. Variables are nothing but reserved memory location to store values. आपको पता है कि जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके लिए एक रिजर्व मेमोरी लोकेशंस क्रिएट हो जाता है. फॉर दैट डिफरेंट मीन्स उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी आपकी रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस होती है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप किसी भी टाइप की जो वैल्यू होती है वो आप स्टोर कर सकते हो. सो बेसिकली फॉर स्टोरिंग द वैल्यू inside the memory location. This means that when you create a variable, you reserve some space in memory. Based on the data types of a variable, the interpreter allocates memory and decide what can be stored in the reserved memory. Okay, so it may be of integer type, it may be of float type, it may be of character, it may be of string type. So according to depends upon your data type of a variable, the interpreter of the Python allocates memory and decide what type of value you have to store in that particular reserved memory. अगर integer type का अगर आपका डेटा होगा तो integer type के लिए जितने नंबर ऑफ मेमोरी साइज़ आपको लगती है उतनी मेमोरी साइज़ वो क्रिएट करेगा, रिजर्व करेगा आपके मेमोरी में, और उसमें जाके आपका integer टाइप का डेटा है वो स्टोर करेगा. Therefore, by assigning different data types to a variable, you can store integers, decimal or characters in this variable. Okay, see, assigning values to variable. Python variables do not need explicit declaration to reserve memory space. The declaration happens automatically when you assign a value to a variable. मीन्स यहाँ पे देखिए, आपको सी जावा के अंदर आपको स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर डेटा टाइप्स रहते थे वो आपको वहाँ पे देने पड़ते थे. बट इन दैट केस इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो टाइप की वैल्यू आप किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करते हो, देन दैट पर्टिकुलर डिक्लेरेशन इज़ कंसिडर्ड दैट उस पर्टिकुलर मतलब जो भी आपका डेटा टाइप की जो भी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में वो कंसिडर हो जाती है. मीन्स डिक्लेरेशन हैपन्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. द इक्वल साइन is used to assign values to a variable. Okay, the operand to the left of the operator, equal operator, is name of the variable, and the operand to the right of the equal operator is the value stored in the variable. So let us discuss the different examples of the Python variables. See here, counter equal to 100. So 100 is of type integer. Okay, so an integer assignment. Then miles 1000.0 means अगर कोई किसी भी नंबर में अगर फ्रैक्शनल पार्ट आता है, so that is considered as a floating point number. नेम इक्वल टू इन डबल कोटेशन जॉन, ये आप सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हो या फिर ट्रिपल कोटेशन में भी आप लिख सकते हो, बिकॉज पाइथन स्ट्रिंग कंसिडर्ड एज अ सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एज वेल एज द ट्रिपल कोटेशन. सो जो भी डबल कोटेशन, सो यहाँ पर देखिए इन दिस केस यहाँ पर आपको कोई भी डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. No data type you have to mention here. Automatically with the help of the values, आपका जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड हो जाता है इन केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके, सी प्रिंट काउंटर, प्रिंट माइल्स एंड प्रिंट नेम.
So this will print the values of all these variables. So here 100, 1000 and John are the values assigned to counter miles and names variable respectively. This produces the following result. So likewise this will produces the output. So first one will be considered as a integer variable because you are assigning integer value. Second one will consider as a floating type variable because you have assigned the floating type value. And in third case it is considered as a string because you are assigning the string to the name. Okay, so likewise here variables will be declared automatically by assigning the particular values to that particular variables. Next, multiple assignment. Python allows you to assign a single value to several variables simultaneously. For example, a equal to b equal to c equal to 1. ओके, मीन्स ए बी सी को आप तीनों को कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हो यहाँ पर. दिस वन, दैट इज वन वैल्यू विल बी असाइंड टू थ्री ऑफ देम. Here an integer object is created with the value 1 and all three variables are assigned to the same memory location. You can also assign multiple objects to multiple variables. For example, a b c equal to 1 2 and 1 comma 2 comma डबल कोटेशन में जॉन. सो ए हो गया आपका यहाँ पर 1, बी हो गया आपका यहाँ पे 2 एंड सी इज इक्वल टू योर जॉन. दिस मीन्स इसका मीनिंग ये होता है. मीन्स सेम वैल्यू भी आप वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो या फिर बाय यूजिंग कॉमा ऑपरेटर यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज to the multiple variable declaration. Okay, so likewise you can use this strategies to assigning the different values to the variables. Here, see here, two integers objects with the value 1 and 2 are assigned to variable a and b respectively. Okay, and one string object with the value John is assigned to the variable c. Okay, so here two integer objects with a value 1 and 2 are assigned to variable a and b respectively and one with a string. So this is the multiple initialization with the multiple variables. See, next one is the standard data types present in the Python programming language. Standard data types. The data stored in memory can be of many types. For example, a person's age is stored as a numeric value and his or her address is stored as a alphanumeric characters. Okay, so Python has various standard data types that are used to define the operations possible on them and the storage method for each of them. So basically Python has a 5 standard data types. Python has a 5 standard data types. So let us discuss the 5 standard data types one by one in detail. Very first is the Python numbers. Okay, the numbers are data types stored numeric values. The numbers objects are created when you assign a value to them. Let us consider the example. That is, variable 1 is equal to 1 and variable 2 is equal to 10. Okay, so here this 1 and 10 is nothing but the numeric number which is assigned with the help of the equal operator to variable 1 and variable 2. So you can also delete the reference to a number object by using the delete statement. So del keyword here is used for delete the references to the particular number object. So this is the syntax for delete operations. So del var1 comma var2 comma var3 up to
variables n. So var means it is considered as a variable here. Okay, so you can delete multiple variables at a time also by separating them by using the comma operator. So this is the basic syntax for the deleting the numbers object, means reference to a number object. You can delete a single object or multiple objects by using the del statement. Let us consider the examples. Python supports 4 different numerical types. Let us consider the examples of the delete statement. Here del var underscore a comma var underscore b. So here two variables will be deleted, means the reference to a particular number object will be deleted with the help of the del statement. Okay, so this is the basic syntax for the delete statement. Okay, so by just simply writing this statement without any semicolon, you can easily delete the variables declared as a reference to the number object. Now move towards the Python supports 4 different numerical types. These are the basic types of the numeric or number data types. Very first is the integer, that is signed integer, means considered as a positive as well as the negative numbers. Then long integers, they can also be represented in octal and hexadecimal. Then floating point real values, means consist of fractional values. And last one is the complex, that is the complex number. Okay, here are the some examples of the number. तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं. सी हियर लॉन्ग, देखिए सबसे पहले इंटीजर. सो दिज आर द इंटीजर कॉलम्स. तो आप यहाँ पर इंटीजर नंबर्स लिख सकते हो. इंटीजर नंबर इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑक्टल एज वेल एज हेक्साडेसिमल नंबर. सो इंट 10, 100, -786, this is the negative numbers. This first two are positive numbers, third one is the negative number. Then 080, 0 means 0 कभी भी लगाया है तो आपको वो नंबर क्या कंसिडर करना है, इट इज़ अ पॉजिटिव ऑक्टल नंबर. Then -0490, that means negative. Then 0x represented as a hexadecimal number. So 0x260 is a hexadecimal number. Then 0x69 considered as a hexadecimal number again. But these are categorized under the integer data type. Next is the long data type. See here, long is also called as the long integers and they are represented in octal and hexadecimal also. Then 51924361 L. लास्ट में आपको कैपिटल L यहाँ पे पुटअप करना है फॉर कंसिडरिंग एज अ लॉन्ग वैल्यू. इंटीजर सी, लॉन्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग इंटीजर्स. बट इंटीजर और लॉन्ग को अगर आपको क्लासीफाई करना है तो लॉन्ग को आपको हमेशा पोस्ट फिक्स लगाना है कैपिटल L. मस्ट, इट इज़ अ मस्ट कंडीशन. स्मॉल एल अगर आप लगाते हो सो यू विल नॉट क्लासीफाई एज अ 1 और L कौन है, तो आप 1 ऐसा भी लिखते हो, कभी कभी 1 ऐसा भी लिखते हो. सो इट नॉट बी डिफ्रेंशिएट. सो दैट्स वाई capital L is used as a postfix to the every, means at the end of the every number whenever it is declared as a long data type. Long having some values 51924361L, then minus 0x, that is hexadecimal long integer value, end with the L. See, every number is end with L, whether it is small l, whether it is capital L, but always use capital because it is very easy to differentiate between the small l and small l and the 1. Okay, so every number is end with the L, whether it is octal, whether it is hexadecimal, or whether it is a simple integer number. Okay, so these are the long data type which is under the classification of the number data type in the Python programming. Next is the float data type.
See 0.0, 15.20, minus 21.9, 32.3 plus E18. So this is the exponential form of the floating point number. Minus 90, then E100, minus 32.54, E. So these are all the exponential form of the numbers. Okay, so this is the floating point numbers, real values. Then the complex part consists of the uh, actual number as well as the imaginary number. Okay, so 3.14, see here, 3.14 j, 45 point j, then 9.322 e, 36j. Every complex number always end with small j or capital J here. Okay, so here see 0.876j minus 0.6545 plus 0j, then 3e plus 26j. So this is also exponential form of the, so complex number is always end with the j. See here, long always differentiation, long always end with l, and complex number always end with j, whether it is small or capital. Okay, so these are the classification of the numbers present in the number data type present in the Python programming language. Next is the Python strings. See, I already discussed the Python strings, how to literals will be taken, single quotation, double quotation and triple quotations. This is the basically used for string literals for initialization purpose. See here, string in Python are identified as a continuous set of characters represented in the quotation mark. Python allows for either pair of a single or double quotes. Subsets of string can be taken using the slice operator. Okay, square bracket or square bracket inside having colon with indexes starting at 0 in the beginning of the string and working their way from -1 at the end. मतलब अगर आपका string suppose 10 characters का है तो start with 0 and end with 9 means 10 minus 1. Okay, so always consider this, always last index is -1 always. Okay, the plus sign is the string concatenation operator and the asterisk is the repetition operator. Okay, तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि here plus sign is used for concatenation purpose and star sign is used in the string Python string for the repetition purpose. Okay, so it is called as the repetition and it is the plus sign is called as the concatenation operator in case of the Python strings. See, this is the examples of the strings, Python string. Here I will assign one literal to the str. So this is the str variable here. यहाँ पर जो है ये str is a variable और उसको मैंने hello world ये एक जो string है वो मैंने assign की है. I just draw this diagram here. H E L L O, then again 5, one space is there, then W O R L and D. Okay, so H E L L O space W O R L D. Okay, so H is having 0 index, E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 here. Okay, so see, print str.
let us consider the differences between the each and every statement, printf statement, how the printf statement will work with str variable. Very first statement is print str here. So print str, simple str, so print str will print the hello world total world. ओके, सो टोटल जो आपकी स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी प्रिंट करेगा. नेक्स्ट इज द प्रिंट एस टी आर ज़ीरो. ज़ीरो रिप्रेजेंट ब्रैकेट्स के अंदर आप अगर कोई इंडेक्स दे रहे हो तो पर्टिकुलर वही इंडेक्स आपका प्रिंट होने वाला है. सो ज़ीरो लोकेशन पे कौन है, एच. सो एच विल बी प्रिंटेड ऑन दी स्क्रीन हियर. देन थर्ड स्टेटमेंट इज प्रिंट एस टी आर 2:5. मतलब यहाँ पे अभी रेंज प्रोवाइड की है. सो 2 आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे. सो इट विल प्रिंट LLO ओनली. सो LLO विल बी प्रिंटेड ऑन दी स्क्रीन. नेक्स्ट इज द प्रिंट STR2:, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया है, मतलब आपको एंड जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया है. सो 2 लोकेशन इज ऑन L. देन रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग होल विल बी प्रिंटेड. सो LLO WORLD. okay, then I already discussed plus means concatenation and star means here repetition. Okay, so print str multiply operator 2, so star operator 2, so it means it will repeat the string 2 times. So hello world will repeated the 2 times. So hello world यहाँ पर आपको 2 बार वो जो है वो printf आपको प्रिंट होगा आपका जो स्ट्रिंग, पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है, just because of with the help of the star operator, because star operator is used for the repetition purpose. तो जितनी बार आपको उसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैंने 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स your hello world will be printed on the console. Then last one is the print str plus test. So str plus is a concatenation, जो constant string literal है उसको आपको concat करना है. So hello world, then test will be concatenated with the str. So in this way your string str, जो भी आपका string str है, अगर मैंने उसको अलग अलग ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने अप्लाई किए विथ कोलन, देन such a type of outputs will be displayed on the screen. Okay, so this is the string in the Python programming language. In this way they will be work. Next is the Python list. Okay, list are the most versatile of Python's compounds data type. A list contains items separated by commas and enclosed within the square brackets. Okay, to some extent list are similar to array in C. मतलब जो भी आप array डिक्लेरेशन करते हो C के अंदर, वैसे ही लिस्ट आपका पाइथन के अंदर काम करता है. One difference between them is that all items belonging to list can be of different data types. मतलब हेटेरोजीनियस डेटा टाइप्स जो कलेक्शंस होता है सी के अंदर उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर एंड लिस्ट विल बी सिमिलर. मतलब यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शंस होगा आपके लिस्ट के अंदर. द वैल्यू स्टोर्ड इन अ लिस्ट कैन बी एक्सेस यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर, मीन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोलन, जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, with indexes starting at 0 in the beginning of the list and working their way to end -1. Again, the plus sign is the list concatenation operator and the asterisk is the repetition operator. Let us consider the examples of the list. See here, let us discuss the examples of the Python list. Here I declare one list here. यहाँ पर एक जो लिस्ट है वो डिक्लेयर की है, हैविंग इंडेक्स फर्स्ट वन 0 1 2 3 4. ओके, सो ABCD फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग टाइप, कॉमा 786 कॉमा 2.23 फ्लोट टाइप, 786 इंटीजर टाइप, देन जॉन अगेन स्ट्रिंग, देन 70.2, यहाँ पर 70.2 है, देन एंड विथ दिस. Then teeny list, second list 1 2 3 comma John. Okay, so this is your, so this is 0 and this is 1 again.
So it will print a very first statement is the print list. It will print the list consist of all the 5 items. So this is the output ABCD 786 2.23 John and 70.2. Next is the print list with the square bracket and having 0. So 0 location पे कौन है ABCD. So only ABCD will be printed on the console. Next is the print list 1:3. सो 1 लोकेशन से लेके 3 तक आपका ये जो है वो प्रिंट होने वाला है. ओके, सो अप टू 3. सो 1 लोकेशन पे आपका क्या है, लोकेशन पे आपका क्या है 7 8 6 एंड अप टू 3. सो 3 minus 1, so 3 minus 1 becomes 2.23. So your output is 786 and 2.23. Okay, this is the third statement output. नेक्स्ट वन प्रिंट लिस्ट 2:. तो 2 लोकेशन पे आपका है ये 2.23. उसके बाद में रेस्ट ऑफ ऑल आपका प्रिंट होने वाला है. सो 2.23 जॉन 70.2 विल बी प्रिंटेड ऑन दी कंसोल विद द हेल्प ऑफ द फोर्थ स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज द प्रिंट टीनी लिस्ट *2. स्टार एस्टेरिक ऑपरेटर इज यूज फॉर रिपीटेशन पर्पज. ओके, सो टीनी लिस्ट में क्या क्या है 1 2 3 कॉमा जॉन. सो रिपीटेड 2 times. So 1 2 3 John, 1 2 3 John will be printed on the console. Then print list प्लस टीनी लिस्ट. तो यहाँ पर दोनों लिस्ट जो है वो कंबाइन करने हैं. सो फर्स्ट वन इज द लिस्ट एंड सेकेंड वन इज द टीनी लिस्ट. So first list is ABCD 786 2.23 John 70.2. So see, this is the output and it is concatenated with the 1 2 3 and John. So it will be 1 2 3 and John. यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, but this will be the output. Okay, so in this way your Python list will be work. It is just similar to string. तो स्ट्रिंग में जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे, वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके एरे के जैसे यहाँ पर रहते हैं. बट डिफरेंस इज कि डिफरेंट इट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस डेटा टाइप्स. तो नंबर ऑफ 0 इंडेक्स से स्टार्ट होके -1 तक आपको कंसिडर करना है जस्ट लाइक अ एरे. और जैसे मैंने स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए वैसे ही आपको सेम लिस्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और जो भी उसके आउटपुट्स है वो आपको कंसोल पे दिखाई देते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ द पाइथन सेटअप you can please execute this all these programs and check the outputs according to the same. Okay, so I hope you understand all these things, that is variables in the Python programming language and data types in the Python programming language. Today we will discuss the numbers data type, then numbers data types, then string data type, and then list data types. The remaining part of this topic we will discuss in the next video. So till then, thank you so much. Thank you everyone. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.